Good morning, dear students. Today we will learn conversion of fraction to decimal. So let's begin with fractions in which numerator is greater than denominator. To convert the given fractions into a decimal, we follow some steps. Step 1. Write down the number given in the numerator. In step 2, we count the number of zeros in the denominator and put a decimal point such that the decimal places are equal to the number of zeros. Let us take some examples to understand it. Example 1. Here the fraction is 43,434 upon 10. See student, here numerator is greater than denominator. So according to step 1, पहले हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे. तो हियर न्यूमरेटर इज 43,434. देन अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 1 जीरो है. नाउ वी पुट ए डेसिमल पॉइंट सच दैट डेसिमल प्लेसेस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस. So there are only 1 zero in the denominator. See student, there are only 1 zero in the denominator. So we count one place from the right towards left. So it means we put decimal point before 4. Thus we get 4,343.4. Now see the second example. Suppose here I have taken 81 upon 10. Here numerator is greater than denominator. तो पहले हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे. अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है. तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 जीरो है. सो इट मीन्स वी काउंट वन प्लेस फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट. हम राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. सो वी प्लेस डेसिमल पॉइंट बिफोर 1. एग्जाम्पल थर्ड, 112 upon 100. Students, see here we have 2 zeros in denominator. So firstly we write down the number given in the numerator. So here we have 112 and then after that we count 2 places from the right towards left. So 1, 2. Decimal point 1 के पहले आ जाएगा. Thus we get 1.12. Example 4. And suppose here I have taken 45,675 upon 1000. So firstly write the number given in the numerator. So numerator is 45,675. In second step, अब हमें decimal point को यहाँ पे लगाना है. तो let's see how many zeros are given in denominator. तो यहाँ पे denominator में we have given 3 zeros. यानी कि हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ काउंट करते हुए 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे. सो 1, 2 एंड 3 यानी कि डेसिमल पॉइंट 5 एंड 6 के बीच में आ जाएगा. सो द आंसर इज 45.675. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर? सो टू कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू ए डेसिमल वी फॉलो सम स्टेप्स. Step 1. Put zeros in the front of digits of the numerator to get as many digits in the numerator as in the denominator. In step 2, we count the number of zeros in the denominator and put a decimal point such that the decimal places are equal to the number of 0. Let us take some examples to understand it. And here I have taken 8 upon 10. See, here numerator is less than denominator. तो पहले हम numerator को as it is लिख देंगे. Now we have to place decimal point. So we count the number of zeros in the denominator. तो यहाँ पे denominator में we have only 1 zero. So we count one place from the right towards left to place decimal point. यानी कि decimal point 8 के आगे आ जाएगा. Because it is 8 tenth. और आप इसे भी क्या रीड करेंगे? 8 tenth. Take some more examples. 14 upon 100.
Now students, see here, we have 2 zeros in the denominator. So it means we count 2 places from the right towards left और decimal point लगा देंगे. So 1, 2 यानी decimal point 1 के आगे आ जाएगा. Example third, 5 upon 1000. It is 5,000. So here we have 3 zeros in denominator. It means we count 3 places from the right towards left. But यहाँ पे तो हमारे पास 1 ही digit है. So it means we put 2 zeros and then we place decimal point. Example 4. Suppose here I have taken 756 upon 1000. Now students, again we count 3 places from the right towards left. तो 1, 2, 3 यानी कि decimal point 7 के आगे आ जाएगा. So it is 756,000. Student, how we will convert fraction into a decimal when it is not a decimal fraction? Suppose here I have 2 1/4. तो इसे हम decimal में कैसे convert करेंगे? We know that it is a mixed fraction. तो पहले तो इसे हम improper fraction में convert कर लेंगे. तो 4 2s are 8, 8 plus 1, 9/4. So इसे हम सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हैं. 9 को डिवाइड कर दिया 4 से. So हमें मिल जाएगा 2.25. या तो फिर हम 9/4 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें. सो स्टूडेंट, हम 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 मिल जाए. एंड वी नो दैट 10 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4. तो हम 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें डिनोमिनेटर 100 मिल जाए. तो वी नो दैट 25 4s are 100. तो न्यूमरेटर में भी हम 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 225. Now we have converted this into a decimal fraction. Now you can see here in denominator we have 2 zeros. यानी कि हम right side से 2 place count करके decimal point को लगा देंगे. So we get 2.25. So students, this is how we can convert given a fraction into a decimal. I hope your concept is clear. Now it's practice time and your questions are here. So pause your video and please solve it, and we'll meet in next video. Till then, thank you. Bye bye.